Hello everyone, welcome back to the channel. So starting with the news analysis for 22nd of November. So social media pe we talked about that this video is going viral जो tunnel में people are trapped. So एक कैमरे के through we've been able to understand situation क्या है उनकी. So first visuals of 41 people trapped in the tunnel emerge. Rescue team identify the workers using an endoscopic camera. So we are taking the help of technology. How during disaster management it can ease the things little bit in the short term perspective, and even rescue maybe अगर हम बात करें तो we've been using advanced machines, but so far we have not been able to successfully rescue the people. So horizontal drilling has been created, drilling to create a safe passage. This exercise resumes. So there. So BRICS summit and Chinese president calls for immediate ceasefire in Gaza. So यहाँ पे भी this article is about Netanyahu and Hamas chief. They hint at deal on Gaza truce. So again यहाँ पे भी things are not certain as of now. मतलब इतना clearly अभी नहीं निकल के आया. So we're just expecting and assumptions हैं. So basically ब्रिक्स में या इवन यूनाइटेड नेशंस में हम भी बात कर चुके हैं कि क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, यून ने भी बोला है कि एक सीज फायर होना चाहिए, बट स्टिल अभी ऐसा कुछ एंड गोल हमने अचीव नहीं किया है. सो वी हैव बीन सीइंग कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किस स्केल पे हो रही है. स्पेसिफिकली अगर हम गाजा की बात करें, सो सप्लाई ऑफ वाटर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दैट मस्ट आल्सो बी रिस्टोर्ड इन द पैलेस्टीनियन एनक्लेव एज वेल. एंड इस वॉर के थ्रू, इस अटैक के थ्रू हमने बात करी थी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, व्हेन वी टॉक अबाउट कि इंडिया के लिए क्या लेसन हो सकते हैं. सो देयर वी टॉक्ड अबाउट कि क्या इंडिया में भी एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम हमें बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है. Then one-horned rhinos and the babies grazing in the Popithora Wildlife Sanctuary, which is there in Assam. So we get the one-horned rhinos in India in Assam. And apart from this, we also come across news like poaching related to the horns of these rhinos, because the jo horns hain illegally smuggled hote hain, they are sold in markets of China and Hong Kong, क्योंकि उनकी कुछ सी medicinal properties है जिनके लिए उसको use किया जाता है. But again we have the CITES convention which prohibits illegal smuggling of the even the wildlife species also, who are basically not dead, they're still live. So that's there. And यहाँ पे हम बेसिकली वन हॉर्न राइनो स्पीशीज की बात करें तो हम देख सकते हैं, और जो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ राइनोज हैं कि कौन से सिर्फ इंडिया में मिलते हैं या ऐसा है, लाइक आई कांट रिकॉल इट एग्जैक्टली. देयर इज अ स्पीशीज ऑफ राइनो जो इंडिया में और एक और कंट्री में मिलते हैं. सो ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. प्रीलिम्स पे इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है. So Lashkar-e-Taiba, this has been listed as a terrorist organization by Israel, and this is so in case of India also. So that is under the UAPA Act, Unlawful Activities Prevention Act. So ahead of the 15th anniversary 26/11 Mumbai attacks, Israel listed the Pakistan-based militant organization Lashkar-e-Taiba. So जब हम internal security की बात करते हैं, the threat from conventional, what are the conventional threats to internal security? So terrorist organizations forms one component of it, and इसमें one example is again the Lashkar-e-Taiba organization, जो एक Pakistan based militant organization है. So Lashkar-e-Taiba is a deadly and reprehensible terror organization responsible for the murder of hundreds of Indian civilians as well as others. And
अटैक, जो मुंबई टेरर अटैक की हमने बात करी, उसके बाद क्या रिफॉर्म्स लेके आए हैं प्रवेश, आप उसके बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हो? रिगार्डिंग व्हाट मानसी? जो 26/11 मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके बाद हमने क्या रिफॉर्म्स किए हैं एज पर सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड? तो एक तो हमारे यहाँ जो टेरर लो है, जिसको हम टाडा बोलते थे उस टाइम पे, उसको अमेंडमेंट करके उसको यूएपीए बनाया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इसके अंदर पहले ये होता था कि टेरर एक्टिविटीज होती थी तो उसके बाद जो है वो कानून अप्लाई होता था। लेकिन अभी वो जो यूएपीए है उसके अंदर अगर आप, सरकार को लगता है कि आप टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या आप फ्यूल कर रहे हैं किसी भी तरीके की टेरर एक्टिविटीज अगेंस्ट द इंडिया, तो आपको बुक कर लिया जाता है। एक तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमारे यहाँ यूएपीए है। फिनेंस उनका रोकने के लिए हमारे यहाँ जो पीएमएलए है, फेमा है, ये एक्ट है। तीसरा, ये जो हमारी एजेंसीज हैं उनका इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम है, जैसे कि एमएचए है, और अलग अलग जो रीजनल हमारी कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा नेपाल के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, यूएस, तो सभी कंट्रीज के साथ हमारा ये है। और तीसरा ये कि हमारा जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है उस पर भी काम हो रहा है। तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज आर वर्किंग। आई विल ऐड वन मोर पॉइंट। एनआईए एक्ट आया था 2008 में, हम्म। इसको भी आप रिफॉर्म किया गया 2019 में, जिसके पास दो तीन एरियाज है। नाउ एनआईए कैन डेजिग्नेट टेररिस्ट टू इंडिविजुअल आल्सो, एंड सेकंड इज इट कैन आल्सो इंक्लूड अदर एरियाज, फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पहले नहीं था इसके एनआईए के अंदर में। और उसके बाद तीसरा एरिया होगा कि इट कैन आल्सो वर्क इन द एक्स्ट्रा इंटरनेशनल स्फीयर ऑल्सो। पहले इंडिया के अंदर इनका स्फीयर था, वर्किंग स्फीयर। अब वो कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। और इस अटैक के और बाद हमने ज्यादा एम्फसाइज भी किया था मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी, क्योंकि जो टेररिस्ट है दे एंटर्ड इंडिया थ्रू द सी रूट। पोस्टल कार्ड को हम्म। ठीक। और ये जो अटैक है इसके बाद से हमारे यहाँ दो चीजें नई और बनी है। जैसे एक तो एनआईए 2008 में बनी, और उसी के साथ साथ एक और चीज बनी थी कि नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो वो भी हमारे यहाँ पर है। तो वो सेंट्रल लेवल एजेंसी होती है, तो प्रेरणा कैन टेक दैट। और हमारे यहाँ स्पेशल डिवीजन है इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम और अफेयर्स एक और टू डील एक और प्रवेश, रेडिकलाइजेशन। हाँ, एक और एक था जिसमें एनसीआरबी के अंदर में जो इंटीग्रेटेड पुलिस स्टेशन बनाया गया था ना, साइबर इंटीग्रेटेड पुलिस स्टेशन, एक वर्ड है हम्म। उसका, जो आई थिंक प्रेरणा कैन सर्च। तो वो भी बनाया गया था ताकि क्या होता है कि एक जगह एफआईआर हुआ है तो बाकी लोगों को पता नहीं चलता है कि वो किस पर एफआईआर हुआ है, तो इंटीग्रेटेड एफआईआर का कुछ सिस्टम बनाया गया था। ठीक, मैं सर्च करके बताता हूँ। ओके। आगे बढ़ाओ। हाँ भाई। सो ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू स्टार्ट द मैत्री फेलोशिप प्रोग्राम। सो इसके अंडर बेसिकली विल बी सीइंग दैट। सो यहाँ पे अगेन हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देयर वाज एन इवेंट। सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट विल स्टार्ट द मैत्री फेलोशिप प्रोग्राम under which Indian researchers they will get to spend 6 months to 2 years at a think tank in Australia, and researchers from the country they will spend the same time at an Indian institution. So this is at bilateral level, मतलब दोनों countries में होगा ये। And apart from this, highlighting the role of youth in influencing how the nations in the Indian Ocean region they are reshaped. So all the countries they need to work together to ensure there is no conflict. हाँ, मतलब कि रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ नहीं होना चाहिए है, बिकॉज अगेन यूथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो वो कैसे कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं उसको और स्ट्रेंथन करने के एक ये हम एजुकेशन सेक्टर में इनिशिएटिव लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी वी आर ट्राइंग की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया में अपने कैंपसेस बनाएं, बिकॉज सो फार अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इवन ऑस्ट्रेलिया की ही पहली यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में अपना कैंपस गुजरात में बना रहे हैं, जो कि डीकन यूनिवर्सिटी इज द नेम ऑफ द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी।
सो क्लाउड सीडिंग की हम बात कर रहे थे कि दिल्ली एनसीआर रीजन में की जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, बट वी आर सीइंग कि सिंस मुंबई में भी एयर इज लाइक इन अ वर्स सिचुएशन, सो क्लाउड सीडिंग वहां पे मुंबई में की जाएगी. सो दिस इज बीन अपडेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. एंड a Dubai based company was recently approached by BMC for cloud seeding. And MAU अभी sign नहीं हुआ, it will be signed and it will be hiring 1,000 water tankers, wash the city roads on alternate days. So this will greatly reduce the dust and air pollution will also go down. बट यहाँ पे अगर ये एक मेजर है कि ऑल्टरनेट डेज पे रोड्स विल बी वॉश्ड, सो एडिक्वेट एंड एफिशिएंट यूसेज ऑफ वाटर हम कैसे इंश्योर करेंगे थ्रू दिस, बिकॉज अगेन प्रॉब्लम इज वाटर स्कैर्सिटी. क्लाउड सीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो इकोनॉमिकली फीजिबल है हमारे लिए? नहीं, वो एक कॉस्ट इंटेंसिव एक्सरसाइज है एंड उसका इम्पैक्ट की भी अगर हम बात करते तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें बेनिफिट दे सकता है, बट वी आर नॉट श्योर कि वो जो लॉन्ग टर्म एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है क्या वो उसको हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगा नहीं करेगा. क्योंकि एक टाइम अगर हम क्लाउड सीडिंग करते हैं तो कितने टाइम विल बी गेटिंग द रेन, वो चीज भी मतलब वेरी करती है. सो विल हैव टू लुक इनटू दैट एंड प्लस द केमिकल्स जो हम यूज करेंगे उसका क्या एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरमेंट पे, एंड क्या वो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा. तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं. लाइक दुबई में ऑलरेडी क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन एक बार ये इवेंट हो चुका है. सो वील हैव टू लुक इनटू दैट कि इंडिया में इसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे अगर ये मुंबई में होता है तो नहीं होता है, तो उसको और डिटेल में हम आगे लेंगे. बट अभी के लिए दिस इज बेसिकली वी कैन से इज द डिबेट अराउंड दिस. So Pravesh, yesterday we were talking about कि parole और furlough में क्या difference है, so can you please tell कि furlough होता क्या है? So basic rights of prisoners क्या होती है? Convicted prisoner can himself submit the parole application and need not assign any reason for it. So parole अगर चाहिए किसी prisoner को तो prisoner खुद उसको application file कर सकते हैं, कोई आपको एक reason देने की जरूरत नहीं है for that. So जो parole होती है that is temporary release of a prisoner but granted on the request of prisoner. And this can be denied also. Whereas furlough के केस की अगर हम बात करें तो अगेन इंटरिम रिलीज होता है furlough भी, जैसे कि parole होता है, but it is a basic right of a prisoner. So parole is not a basic right, वो deny हो सकती है, but the furlough forms a basic right of the prisoner. And this is basically the difference between parole and furlough. सो इसमें अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या फर्लो भी प्रिजनर खुद डिमांड कर सकता है फॉर दिस और नॉट, जैसा कि पैरोल के केस में होता है. So when you talk about the Tribal Rights and Forest Conservation Act, so we've seen कि tribal activists hail compensation for the land regularized under the FRA Act. So अगर हम यहाँ acts की बात करें, so firstly Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of the Forest Rights Act 2006 is there. So यहाँ पे बेसिकली भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन किया था फॉर बिल्डिंग ऑफ द रोड प्रोजेक्ट लिंकिंग रायपुर एंड विशाखापट्टनम. सो उसके कॉन्टेक्स्ट में obviously compensation दी गई थी for land regularized under this particular act, and they are basically expressing satisfaction जो उनको compensation award की गई थी by the government. So this is basically you can say कि positive news है. एंड ऑफन यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या कॉन्फ्लिक्ट या क्या इशू रहता है, तो ऑब्वियसली ट्राइबल राइट्स प्रोटेक्शन की हम ज़्यादा बात करते हैं. एंड वी सी कि
we are not seeing as far as जो हमारे पास laws है proper implementation नहीं होता है when it comes to their rehabilitation या उनकी जो livelihood opportunities है, because then they are completely shifted to another place जो obviously it is completely new for them. And और जो अगर traditional concerns की हम बात करें तो definitely there is risk of losing their traditional practices and the cultures. सो यहाँ पे इट इज बेसिकली किन से कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट के भी हम एक एंगल की बात कर सकते हैं. So as per the state government, agar forest land is to be acquired, the scheduled tribes and traditional forest dwellers, they having the title to hold and live on the land for habitation or self-cultivation. For livelihood, they would lose the right forever. That is the forest right holders. They are entitled to get compensation in this case. So this is basically what the law says. So here we see Ministry of Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, they have informed Rajya Sabha that approvals were granted for diversion of approximately 90,000 hectares of forest land in India for developmental projects between 2018 and 2023. So यहाँ पे even forest land भी है जो loss of biodiversity होगा will be going for deforestation. So how are we going to actually compensate for that loss? So एक definitely concern है amount of carbon जो release होगा because of deforestation given the climate change impacts that we are seeing. तो बहुत सारे dimensions आ जाते हैं. So Kolkali, it is a folk art which is being performed by the mothers grouping of Thrissur, and this is in Kerala. So in remembrance of Saint Thomas' arrival in India. So इसके बारे में थोड़ा सा और हम सर्च कर सकते हैं. So what is the impact of climate change on health? So एक dimension की बात करें, COP28 दुबई में था. So here it is important to examine कि climate change ने country की health के ऊपर क्या impact किया. So प्रवेश and औशिक आप इसको discuss कर सकते हो till the time I just scan through the important details in this article. कि क्या impacts हो सकते हैं climate change के health के ऊपर. Am I audible? औशिक, प्रवेश? ओके करुणा, आप बताओ कि हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के. यू कैन डिस्कस लाइक सचिन, यू कैन आल्सो डिस्कस दिस टॉपिक. क्लाइमेट चेंज के साथ जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी न्यूट्रिशन को, हमारे वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करता है क्लाइमेट चेंज से. उसके बाद हमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, उनका भी रिस्क जो है एयर पोल्यूशन की वजह से इंक्रीज हो जाता है, जो कि 1.8 से लेके 2.8% तक इंक्रीज हो जाता है हीट वेव्स की वजह से. हीट वेव्स की वजह से डेथ के केसेस भी आने लग गए हैं एंड हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं विद टाइम. अगर हम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात करें तो उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है, बट इट इज रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया. तो इसके केसेस भी विद टाइम बढ़ सकते हैं, तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी साथ साथ में ध्यान देना चाहिए. हाँ, मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है एक तो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होंगे हेल्थ के ऊपर. डायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली कि जो सिकनेस एसोसिएटेड है विद
क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट होंगे, इनडायरेक्ट में न्यूट्रिशन या हमारी जो फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट वुड बी इम्पैक्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्लस लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर भी एक इम्पैक्ट होगा, एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वुड ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड. सो एक ये चीज़ है, यहाँ पे डबल बर्डन की ये बात हो रही है, बर्डन ऑफ मोबिडिटी दैट इंडिया फेसेस फ्रॉम द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस that would be more worsened by climate change. So it could facilitate the growth of vectors also like mosquitoes. So उसकी वजह से डेंगू ये सब और जो डिजीज है इनका नंबर फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. सीजनैलिटी ऑफ द इन्फेक्शन थ्रू द चेंजेस इन देयर लाइफ साइकिल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट कैन बी मोर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज वेक्टर्स. And it could also facilitate introduction of new vectors at the same time. So new challenges would also emerge in this form. Epidemics could commonly occur after floods as well. So हमारे health sector की जो preparedness है to deal with such a situation in future, given the lessons that we had from COVID-19, so उस पे हमें और work करने की ज़रूरत है. And apart from this, जो keywords है like chronic obstructive pulmonary diseases, इसका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा हीट वेव्स की वजह से. डेफिनेटली हीट, देन फिजिकल एक्सर्शन एंड डिहाइड्रेशन के केसेस और इंक्रीज हो सकते हैं, एज वी आर सीइंग दिस इन केस ऑफ यूरोप एज वेल. किडनी इंजरीज हो सकती हैं इसकी वजह से, एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, दिस कुड बी इमर्जिंग इन फ्यूचर. सो हमारे हेल्थ सेक्टर की क्या प्रिपेयर्डनेस लेवल है टू डील विद such types of, you can say, lifestyle disorders also, and जो capacity है to deal with other kind of diseases. Apart from this, we are urbanizing at a rapid pace in unplanned manner. So यहाँ पे definitely hospitals or health infrastructure is also an important part of urbanization, and definitely actions at all levels that is required. And global, regional, local levels पे cooperation coordination is important. So हमारी national health policy की अगर हम बात करें, apart from this, we've been talking about drug availability, एक तो उसका stock, and then secondly the standard, so that's important. Then double burden of communicable and non-communicable diseases हम ले चुके. So India और Japan developmental projects में कहाँ collaborate कर रहे हैं, we can just have a look at the examples. So Chinese-led infrastructure projects, due to their sustainability and geopolitical concerns, they are a concern for all the countries of Indo-Pacific region. So basically China ने कुछ infrastructure projects introduce करे हैं in South China Sea region. So Philippines is now redirecting its attention to Japan and India's alternative sources of development and security. So transportation security, specifically maritime security, is very important. Then apart from this, securing the sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea against China's revisionist interest in the Indo-Pacific region, that's important, because we are seeing कि China के जो claims है over the 9-dash line and exclusive economic zone की जो rights of different countries, they are getting violated. So that's why sovereignty, this is important. And apart from this, Philippines and Japan, they share a close strategic partnership as well. Overseas development assistance, largest source Japan है for Philippines. Apart from this, hub and spoke model of development. And अगर हम यहाँ पे और बात करें about India's role, then MOU between the Philippine and Indian Coast Guard, it will allow both the sides to improve their interoperability, intelligence sharing, and maritime domain awareness. And apart from this, India has also offered to supply Philippine Coast Guard with the 7 indigenously manufactured helicopters based on a soft loan agreement with extended payment terms. And we can also have an agreement for the supply of BrahMos supersonic cruise missile delivery to Southeast Asian country later this year. So this year prelims में we had the question की supersonic और क्रूज मिसाइल्स में बेसिकली क्रूज मिसाइल्स में क्या डिफरेंस होता है.
And apart from this, Asia-Africa Growth Corridor. So developmental networks across Asia and Africa, they have been creating basically एक ही corridor है जैसे हम बात कर सकते हैं कि this can be also one of the alternatives smaller scale पे, because again this is restricted to Asia and Africa, to BRI. तो यहाँ पे important details हैं. India Japan Special Strategic and Global Partnership best defined through the robust ties they share. So India Japan collaboration या partnership हम बात कर सकते हैं कि Japan one of the largest investor हैं in the infrastructural developmental projects in India's northeastern states. So there also Japanese investments play important role. तो थर्ड कंट्री कोऑपरेशन मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं एज फार एज दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन इज कंसर्न्ड. So जैसे इंडिया जापान बांग्लादेश में we have the trilateral partnerships, we can also have a similar kind of partnership between India, Japan and Sri Lanka as well. So climate change के अराउंड सबसे बड़ा कंसर्न क्लाइमेट फाइनेंस है. तो OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के ऊपर जो उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग. सो जस्ट इज OECD is largely a group of rich countries. Their headquarters is in France and Paris, and including US, UK, Germany, France, Switzerland. So these are the countries part of OECD. So the report as such offers a peek into their idea of climate finance ahead of COP28 climate talks in UAE. So report का कहना ये है कि around $73 billion mobilized in 2021 by public sector, and around you can say $50 billion was provided as loans. So they're just providing the numbers कि कितना finance उन्होंने अभी तक provide किया है. So since these are obviously rich countries and developed countries, we often talk about कि they do not accept जो उनकी climate finance से regarding responsibility, talk about the common and differentiated responsibilities. So these are not acknowledged by these developed countries. So that is why this report is important, जो हमें एक idea दे सकती है कि what was their discussion all about, क्या outcome आया. So to meet the scale of challenge, people like the US climate envoy, like John Kerry, have routinely emphasized the role of private sector, that obviously their role is also very important here. Convention, United Nations Framework Convention on Climate Change. This is important. And यहाँ पे अगर हम बात करें, so global stocktake report की हमने बात करी थी. Apart from this, here we see developed nations COP26 talks in Glasgow 2020 to double the adaptation finance. So 2020 में this was there, but so far we have not seen this actualizing actually. And UNFCCC also said with deep regret कि developed nations block they had not met जो उनका $100 billion का climate finance का goal था every year. So this was announced in 2020 and this has not been even fulfilled for one time. यहाँ पे इंडियन मटेरियलिज्म का क्या मतलब है? हाँ, I was looking at that only. इसमें जो define किया गया है what is actually the matter. So यहाँ different dimensions में इसको explain किया है. Like when you talk about simply putting what does materialism mean, या इसको हम ज़्यादा associate करते हैं with the kind of lifestyle that we are having. So simply put, it means maintaining that the origin of everything that really exists is matter. That there does not exist anything but matter. So materialistic मतलब वही हो गया. अब इसको ये थोड़ा सा they're trying to define it broader sense. अगर हम इसको lifestyle से associate करते तो having luxury cars or a luxury house, it is nothing, just a matter. But
जो उसके साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है, दैट मेक्स इट मोर हम बोल सकते हैं मटीरियलिस्टिक कल्चर है सर. दैट ऑल अदर अपीयरेंसेस इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस, दे आर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैटर. These transformations are governed necessarily by laws inherent in nature, which is fundamentally material. So basically इसको material और matter से पूरा associate कर रहे हैं. मतलब even matter को भी जो transform किया जाता है, जैसे जो लग्जरी कार्स बनती हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने में भी आपको इंटेलिजेंस चाहिए. एंड जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, डेफिनेटली दे फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल लॉज, वी कैन से. सो सब कुछ एक तरीके से फंडामेंटली मटीरियलिस्टिक बेसिस या लॉज की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर सब चीज, ये पूरा इकोसिस्टम फंक्शन कर रहा है. एंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं लाइक atomism of Democritus and Epicurus is as well as pre-Socratic philosophers की बात की गई है. Desire to find an explanation for the constituents of cosmos. They were the earliest examples of materialism in the Western tradition. India में, ancient India में materialism found grounding with the Lokayuk, which was pioneered by philosophers like Brihaspati, Ajit and Jabli among others. एंड यहाँ पे अगेन एक एग्जाम्पल है ग्रीक फिलोसोफर्स का. सो व्हाट्स इन अ नेम. अगर मटीरियलिज्म की बात करें, इन इंडिया इट हैड मेनी नेम्स. लाइक मटीरियलिज्म को एंशिएंट इंडिया में वी यूज्ड टू कॉल इट बाय सेवरल टर्म्स. सो दीज आर द टर्म्स टू डिस्क्राइब मटीरियलिस्ट्स एंड सबकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. फिर व्हाट डज ईच ऑफ दीज टर्म्स मीन. You can just quickly go through that, their derivation. So यहाँ पे यही चीज की बात की गई है. So Indian philosophic tradition जो था, it held the existence of 4 classical elements in correspondence of their Hellenic counterparts. So क्या थे वो 4 fundamental elements? So these are again fire, water, wind and earth. So how does reality come into picture though with these variegated forms and from mere elements we see everything? Definitely छोटे से element के ऊपर सारी चीजें based हैं. जो fundamental micro element है, that is हम उनको elements बोलते हैं. Like chemical sense में अगर हम बात करें, chemistry में जो हम terms use करते हैं, elements, atoms, compounds. सो पूरी चीज कहीं ना कहीं अगर हम वी गो इनटू द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, माइक्रो अंडरस्टैंडिंग, तो कहीं ना कहीं सब कुछ इसी चीज के ऊपर बेस्ड है. एंड यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि विद कंसेप्शन ऑफ अ सेल्फ, कॉन्शियसनेस जो है इट इज ऑल्सो इन मटीरियलिस्ट ऑन्टोलॉजी एक फंडामेंटल फिजिकल फिनोमिनन है. सो दिस रियलाइजेशन इट वाज अगेन एविडेंट ड्यूरिंग. सो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें घूम फिर के इंडियन कल्चर का डेफिनेटली पार्ट है. अब एंशिएंट टाइम्स की हम यहाँ पे ज्यादा बात कर रहे हैं. सो डेफिनेटली माइंड की भी अगर आप बात करोगे, सो दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ मैटर बीइंग अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन. So ideas, they are not primary phenomena, but rather जो reflection है, they are also reflection of material process and changes upon human consciousness, which is itself a material process. So यहाँ पे जो एक हमारे fundamental idea है with materialism, हम उसको goods and services के साथ ज़्यादा associate करते हैं with the economy, but यहाँ पे थोड़ा philosophical और historical perspective भी क्या होता है Indian materialism का, उस चीज की पूरे आर्टिकल में बात हो रही है. सो दिस कैन बी वन यूनिक एडिशन टू आवर आंसर्स और इवन एसेज. मतलब मटीरियलिज्म का एक ये सब हम बोल सकते हैं सबसेट है. So Sathi portal, ministry as the states to encourage use of the Sathi portal. So with a joint entrance examination for the admission to the IITs and other engineering colleges, education ministry officials said that all the states to encourage aspirants to utilize newly launched portal, जिसको साथ ही self assessment test and help for the entrance examinations.
So इसके लिए this portal has been launched by Ministry of Education. So again, जो एक barrier exist करता था for the students who could not pay to access any such basically training programs के लिए, for the poor people, this is going to be helpful to prepare for the competitive examinations. So this is one example, National Education Initiative. This is in line with the National Education Policy with the goal to provide inclusive, high quality education even to remote parts of the country. So this is an online platform, easily accessible, and this is going to be free of cost. So when we talk about this disaster in उत्तरकाशी tunnel, जो हम बात कर रहे इतने दिनों से, यहाँ पे रोल ऑफ मीडिया की अगर हम बात करें, टीवी चैनल्स की बात करें, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट वायरल हो रहा है या जो भी पोस्ट हो रही है इंफॉर्मेशन, देयर सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this can be again one component when we talk about dealing with the disasters is concerned. Role of media is very important given the large social base that they have and the speed with which information gets viral or it spreads. So that is why their role is very important. मतलब अगर कोई एक misinformation भी spread हो जाती है तो again it can create panic kind of situation and फिर आप you can't obviously restore the status quo क्योंकि once the things they spread you can't control it after that. So Information and Broadcasting Ministry, they have asked the television channels covering the rescue operations under the Silkyara Uttarakhand tunnel to refrain from any sensationalizing this issue. So definitely it is associated with human lives and it has been more than 1 week that efforts they still continue. So इस news को sensationalize करके आपको present करने की जरूरत नहीं है. Center says telecast of the footage by channels had the potential to affect ongoing operations at the same time. So वहाँ पे again जो surrounding areas हैं tunnel के आसपास वहाँ पे obviously it can also अगर कोई misinformation spread होती है तो it can cause huge people's gathering also. So एक वो concern भी है जो ongoing operations को definitely affect कर सकता है given जो अभी current challenges है वो इतने ज़्यादा हमारे सामने हैं. So because of the rising sea levels, we are seeing Maldives says that it will fortify islands to beat the rising sea. So वो भी but एक limit तक ही help करेगा because rising sea levels they threaten to some Maldives and Indian Ocean archipelago is already out of drinking water. So drinking water crisis already there and ये जो बाकी risk है कि it might also lead to submergence. So उसके लिए fortification of islands is being proposed by Maldives. So low-lying nation को definitely higher risk है, higher threat है. So to beat back the waves through ambitious land reclamation and building islands higher. So this is one structural change that has been proposed by Maldives. बट यहाँ पे environmentalist and rights groups they have again warned कि इसकी वजह से और एक challenge हो सकता है. It could even exacerbate flooding risks. So again ये permanent solution नहीं है, एक short term solution हम बात कर सकते हैं. So OPEC plus में Russia is a part of it. More OPEC plus supply cuts likely next year. इसकी वजह से crude oil prices और increase हो सकते हैं. So since अभी oil prices fall हो रहे तो this is the production cut that